right. So we are going to talk about the process of RNA synthesis, that is transcription in eukaryotes, which is going to be different from prokaryotes for the reason prokaryotes में जब हमने transcription की बात की थी, we discussed the process that was happening in the cytoplasm क्योंकि वहाँ पे nucleus नहीं होता. The things which are different in eukaryotes, the process of transcription that will take place within the nucleus. So the RNA, any type of RNA, अभी आज हम messenger RNA की बात कर रहे हैं. So mRNA will be transcribed here and then after processing it goes out. मैसेंजर आरएनए की अगर बात की जाए तो मैसेंजर आरएनए को डिफरेंट लेबल्स या नाम दिए गए हैं. इनको HNRNA भी कहा जाता है. HNRNA स्टैंड्स फॉर हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए. इनको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहा जाता है. द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज दैट मैसेंजर आरएनए विच इज जस्ट ट्रांसक्राइब्ड एंड नॉट येट प्रोसेस्ड. जब प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस क्या है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, उसके बाद जो मैसेंजर आरएनए है दैट कैन गो आउट ऑफ द न्यूक्लियस, उसको हम जो है वो मैच्योर मैसेंजर आरएनए कहते हैं. अगर हम जीन को देखें, जीन लेट्स सपोज ये मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस इज द लेंथ ऑफ द डीएनए और द जीन विच हैज़ टू बी ट्रांसक्राइब्ड. This particular portion is referred as the transcription unit. जो pre-mRNA है that will be equal in length to this transcription unit. However, after the transcription process is complete and post-transcriptional modifications occur, the mature messenger RNA will be relatively shorter than the pre-messenger RNA. If we look at the polymerases, prokaryotes में हमने एक ही polymerase की बात की थी which performs all types of transcriptions, but here we have different enzymes performing different transcription functions. Normally अगर हम animal cells की तक limit रहें, there are three types of polymerases, polymerase 1, 2 and 3. But in certain plant cells we have figured out there are certain polymerases 4 and 5. 4 and 5 जो है they are not like required. यहाँ पे इसको मैं इस तरह से कह देता हूँ that 4 or 5 they are not required for survival of the cell, but 1, 2 and 3 they are required for the survival of the cell. Polymerase 1 is responsible for transcription of ribosomal RNA. इसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. Polymerase 2 is responsible for transcription of messenger RNA, मोस्ट स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज. अभी मैंने जो बात की है SNRNA भी कहा जाता है मैसेंजर आरएनएज को. देन इनके अलावा माइक्रो आरएनए और टीलोमेरेज आरएनए दे आर ट्रांसक्राइब्ड बाय पॉलीमरेज 2. पॉलीमरेज 3 अदर स्मॉल आरएनएज लाइक 5S RNA और ट्रांसफर आरएनए. और एक टॉपिक हमारा आएगा जिसमें हम SNRNAs की बात करेंगे, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. उनमें U6 RNA इज ट्रांसक्राइब्ड बाय RNA पॉलीमरेज 3. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गोइंग टू यूज RNA polymerase 2 फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर RNA. यूकैरियोट्स में इन पॉलीमरेजेस के अलावा कुछ और डिफरेंट पॉलीमरेजेस होते हैं which are part of the mitochondria or chloroplast. When we look at the mitochondrial and chloroplast RNA polymerase और इसका comparison करते हैं, we come up with this fact कि mitochondria में और chloroplast में there is present only one RNA polymerase जो कि related है with the prokaryotic RNA polymerase से. So this is one of the evidence during the course of evolution that the mitochondria and chloroplast they became part of eukaryotic cells as a symbiotic relationship during the course of evolution of eukaryotic cells. So mitochondrial polymerase will be different, the chloroplast polymerase will be different, and RNA polymerase 2 for eukaryotic cells is going to be different. Then we come to the eukaryotic gene structure. कल हमने बात की थी सिंपल जीन की बात की थी. There is promoter, there is operator.
फिर प्रोमोटर में हमने 3 रेगुलेटरी सीक्वेंसेस की बात कर ली थी एंड देन वी स्पोक अबाउट कंप्लीट प्रोसेस। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। प्राइमरीली अगर देखा जाए देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ द जीन। वन इज द promoter region, the second one is the operator region that start from this particular point. Let me change the color of the pen. Okay, so the operator region starts from this point and it goes up to this point. This is the operator region. But जैसे कल मैंने बात की थी कि ट्रांसक्रिप्शन विल स्टार्ट फ्रॉम द +1 रीजन। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है that will be transcribed from the +1 nucleotide and it goes up to the terminator sequence that will make up the RNA transcript. This is what we call the pre-RNA transcript or pre-messenger RNA. After that, it is going to be like processed, and after processing, it will give us the mature messenger RNA. अब अगर mature messenger RNA में देखें, then we have again regulatory regions in the messenger RNA at 5' end, which is called as untranslatable region, and at 3' end, which is called as untranslatable region. So these are referred as 5' UTRs, untranslatable region, and 3' UTRs, 3' untranslatable region. Translation starts from the first AUG codon within the mature transcript of messenger RNA, and it terminates at the nonsense genetic code, which is probably UAA, एक है उनमें से. So where this genetic code will come, this is nonsense codon, and there you are going to have the translation termination. So within gene, we can say that there is a gene having 2 components. One is promoter, one is operator. Within operator, we have again can discriminate between 5' untranslatable region, 3' untranslatable region, intergenic regions, and not intergenic, the introns, and then these protein coding regions. When we talk about promoter, like prokaryotes, promoter has a regulatory role and it has some specific sequences at specific positions. This picture, the second picture, shows you 3 different genes in chick, oval, albumin, rabbit, beta globin, and mouse globulin, globin major. If you can see that we have a Tata box in these genes as well, but its position is going to be different. In eukaryotes, Tata box is present at -25 position. Prokaryotes में हमने बात की थी, that was present at -10 position. Besides this sequence, there is another sequence downstream जिसको हम कहते हैं initiator sequence, INR. अभी इसके बारे में बात करते हैं. This is the point where from the transcription is going to start. Besides INR -25, there are 2 additional regulatory sequence. One is at -75 position, which is called as cat box, as you can see here, the sequence cat box, and then -90 position, which is also referred as GC box. What are their role during transcription? We will discuss in detail when we will talk about regulation of gene expression. For today, the only thing is promoter has specific sequences at -25, -75, and -90 position, which have the regulatory roles. These are called as Tata box, cat box, and GC box, respectively. And then there is one INR sequence, which is more towards the promoter region, and this is the point where from the transcription will start. जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. सर अनट्रांसक्राइब्ड रीजन क्यों है 5' और 3'? वहाँ पे क्यों नहीं ट्रांसक्रिप्शन हो रही? नहीं, वहाँ ट्रांसक्रिप्शन होगी, दैट विल बी पार्ट ऑफ द मैसेंजर आरएनए, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं होगा. कीप दिस क्वेश्चन फॉर आवर दैट लेक्चर जिसमें हमने बात करनी है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की. अभी ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ. 5' रीजन जो है वो डिसाइड करता है कि एट व्हाट टाइम ट्रांसलेशन विल स्टार्ट.
और 3 प्राइम यूटीआर डिसाइड करता है हाउ लॉन्ग द मैसेंजर आरएनए विल लिव। ठीक है, इसके टुवर्ड्स एंड एक दो बातें और इसके ऊपर मैं करूँगा। ओके। ओके। सर आपने कहा कि जो जीसी बॉक्स है वहाँ पे इनिशिएशन होगी -90 वाले पे, नहीं, तो मैंने ये मैंने -25। ये बात नहीं, नहीं, मैंने ये बात नहीं की। -90 के ऊपर जो है वो इनिशिएशन नहीं होगी। -90 इज़ वन सीक्वेंस बॉक्स विच इज़ जीसी बॉक्स। ठीक है, जो जी, इनिशिएशन होनी है वो INR सीक्वेंस के ऊपर होनी है। INR। तो -25 जो है उस पे क्या होगा सीक्वेंस? -25 की अभी हम बात करते हैं, टाटा बॉक्स की अभी हम बात करने लगे। ठीक है। जी। ओके। सो सर सर, ये जो जी, सर ये जो नंबर ऑफ है, नंबर दिया गया है प्रोमोटर के सीक्वेंस में, सर ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को शो करता है इस प्रोमोटर सीक्वेंस के? ये पोजीशन को जो है शो करता है। -25 का मतलब है कि द पॉइंट वेयर द ऑपरेटर स्टार्ट, ऑपरेटर और प्रोमोटर का जो जंक्शन है वहाँ से आप लेफ्ट की तरफ काउंट करना शुरू करें तो -25 इज द पोजीशन where Tata box is present. That is the 25th nucleotide position in the promoter region. और अगर -75 की बात करते हैं, proceed down further, -25 के बाद 50 और न्यूक्लियोटाइड काउंट कीजिए, then you reach to -75 position and so on. ओके सर, थैंक्स। Okay, Ji. So, transcription factors. This is something which we have not spoke or discussed in prokaryotes because prokaryotes में जो है RNA polymerase directly interacts with the DNA. In eukaryotes, it is not possible कि polymerase RNA polymerase directly interact कर सके DNA के साथ. It needs number of different proteins और उन proteins को because they are involved in transcription, they are referred as transcription factors. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को अगर मैं ब्रॉडली क्लासिफाई करूं, then I can simply say there are two types of transcription factors: general transcription factors and specific transcription factors. General transcription factors are those transcription factors which can bind with any data box with any gene. Specific transcription factors are those transcription factors which regulate the expression of a specific gene. फॉर एग्जांपल अगर मैं जीन ए और जीन बी की बात करूं तो इनके टाटा बॉक्स के साथ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड हो सकता है, लेकिन जीन ए को ट्रांसक्राइब करवाने के लिए जो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है दैट विल नॉट वर्क विद जीन बी, एंड जीन बी के लिए जो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है दैट विल नॉट वर्क विद जीन ए। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, इफ़ यू गेट फ्लू और अगर आपको जो है वो टेम्परेचर हो जाता है, तो टेम्परेचर जो बॉडी का एलिवेट होता है दैट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ फिजिकल फैक्टर के मेटाबॉलिज्म जो है ज़्यादा हो गया है सेल्स का, तो पूरी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। टेम्परेचर इंक्रीज इज़ बिकॉज ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी अंडर इन्फेक्शन कंडीशन। तो उन जो प्रोटीन्स को ट्रांसलेट करने के लिए जो आरएनए बनेगा, उस आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो स्पेसिफिक फैक्टर आएगा दैट विल बी स्पेसिफिकली वर्किंग ओनली फॉर hypothermia proteins, for those proteins which are heat shock protein, not hypothermia, heat shock proteins. So keep in mind, specific transcription factor will work with specific genes only. फिर इनकी लेबलिंग की जब बात की जाए तो TF स्टैंड्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। हमने एंजाइम्स की बात की है, एंजाइम 1, एंजाइम 2 और एंजाइम 3। जिस एंजाइम के साथ ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करते हैं आगे हम उसका नंबर लगाते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं देखूँ TF2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इज़ गोइंग टू वर्क विद RNA polymerase 2, और उसके बाद उनके आगे अल्फ़ाबेट हमने दिया हुआ है ABCD. This was in the order of discovery. TF2A was discovered earlier than TF2B and so on. There are the transcription factor 2D, A, B. These are the example of general transcription factor. And if we have to speak about start of transcription in eukaryotes, there is a specific sequence of events or a specific sequence which has to be followed by the attachment of these transcription factor.
ये नहीं हो सकता कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H अपनी मर्जी से आके पहले बाइंड हो जाए, किसी जगह पे अपनी मर्जी से बाद में बाइंड हो। सो दिस इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड शॉर्टली। जो बेसल या जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है दैट इज़ TF2D। TF2D इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मल्टीपल प्रोटीन्स। इनमें जो है वी हैव सम प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड एज टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स, and then it has an other uh, group of proteins which is called as TAFS if you look at this picture. So combine करें इनको टाटा बाइंडिंग प्रोटीन को और TAF को, TAF stand for टाटा एसोसिएटेड फैक्टर्स, टाटा एसोसिएटेड factors. So these multiple proteins they jointly make up the transcription factor 2D. To start the transcription, the first step is TF2D will come and will bind with the Tata box. अगर TF2D bind नहीं करता Tata box के साथ, transcription will not start even if all the other transcription factors are available. So if now you look at this picture, Tata box, it is identified by TF2D. TF2D के bind होने के बाद then there comes TF2B and TF2A. They take their respective positions along with the TF2D. अगर TF2D नहीं होगा A और B bind नहीं कर सकेंगे. Once 2D to A to B is in place, then there comes the complex of TF2F and RNA polymerase 2. You can see here TF2F is attaching with the TF2B, and with this TF2F there is attached this RNA polymerase. And if you look at the placement of RNA polymerase, it is somehow taking the cover on the transcription starts it over here. Still, it is not going to start the transcription because there the transcription factor responsible having the helicase activity that is missing. So the last step के ऊपर we get the E and H that come and binds. This is the E1 and this is the H1. They take their position and now this H, TF2H, कल के लेक्चर में भी गालिबन इसकी बात हुई थी, कल के लेक्चर में या से एक दिन पहले नहीं, परसों के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में बात हुई थी रेप्लिकेशन में. TF2H has the ability of helicase activity and kinase activity. अब helicase activity की वजह से it will open up the parental strands, DNA strand, to make the template available, और kinase activity की वजह से it will activate the RNA polymerase 2 and then the transcription will start. I will summarize this picture once again. Tata box, the first step is attachment of TF2D. The second step, अब TF2D में क्या चीज़ें included हैं, TBP और TAFS. Then in the second step, TF2A or B, they come and take their position. The third step, TF2F and RNA polymerase bind to this complex. And then lastly, TF2E and 2H, they come and take their positions. All these multi-protein complex is called as pre-initiation complex. Still, the transcription is not started. And it has been reported that as much as 50 different proteins, just one second. Yes, 50 different components, 50 proteins, they can be present at the point where the transcription has to start. यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फर्दर. जी सर, आपने यहाँ पे पॉलीमरेज 2 के बारे में बात की है, तो आपने TF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2, ये RNA पॉलीमरेज 2 है ना, तो इसके साथ आपने ये A, B और D लगाया, तो ये क्या है यहाँ पे? ये प्रोटीन्स हैं, इंडिविजुअल प्रोटीन्स हैं जिनकी मौजूदगी के साथ ही ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है. आप इसको एक काइंड ऑफ, आप समझ लीजिए दिस इज़ अ काइंड ऑफ पजल, और उस पजल को जब तक प्रोटीन्स के थ्रू कंप्लीट नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती. और इसी कॉम्प्लेक्स को जिसमें मैंने बताया कि सो मच 50 डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं इस PIC में, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में.
जस्ट इमेजिन कि एक प्रोटीन बनाने के लिए सेल को कितनी डिफरेंट प्रोटीन्स की ज़रूरत पेश आती है। जब मैंने इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स जब मैंने सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर कहा है ना, दैट मीन्स वन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज वन प्रोटीन, और अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जो है दैट इज अ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। जी बताइए। सर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है ये इनिशिएशन करवाने के बाद हट जाएंगे ये फैक्टर्स के, ये एंड तक चलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अभी वेट करें, अभी मैंने बाकी बात करनी है, यू विल गेट द आंसर। सर TF2H का एक दफ़ा वो रिपीट कर दें, हेलिकेस और काइनेज एक्टिविटी को। जी अभी मैंने इसकी बात करनी है, TF2H की डिटेल में अभी बात करने लगा हूँ। लेट्स मूव फर्दर। सो जो हमने म्यूटेशन में बात की थी ना, अगर आपको याद है म्यूटेशन रिपेयर मैकेनिज्म में वहाँ क्या था कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन भी जो है रिपेयर मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, और उस में जो रोल होता है वो TF2H का है। नाउ फ्रॉम वेयर दैट TF2H कम्स, दैट द आंसर कम्स हियर कि जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है TF2H इज पार्ट ऑफ द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसके दो रोल्स होते हैं, it has the helicase activity and it has a protein kinase activity। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की डिटेल में जाऊँ, और जो कि मैं नहीं जाऊँगा, सिर्फ आपको इतना बताऊँगा दैट इट हैज़ 10 सब यूनिट्स, और उनमें से सिर्फ 3 के पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, बाकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं रखते। अब हेलिकेज एक्टिविटी से टेम्पलेट स्ट्रैंड इज मेड अवेलेबल, और जो काइनेज एक्टिविटी है व्हाट इट इज गोइंग टू डू। Now, if you look at PIC, pre-initiation complex, everything is set up. The transcription has to start. Helicase activity से template strand separate हो गया है, but we need to look at the movement of RNA polymerase 2 के RNA polymerase 2 जो है it should remain associated with the template and it should move along the template. For that purpose, this movement needs some phosphorylation of the RNA polymerase 2। मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया था कि प्रोटीन की एक्टिविटी और इनएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन। सो हेलिकेज एक्टिविटी जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्फोरिलेशन ऑफ पॉलीमरेज 2। जब पॉलीमरेज 2 की फॉस्फोरिलेशन होगी, आप डिफरेंट साइट्स हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड में उसकी भी बात करता हूँ। Once this RNA polymerase is phosphorylated, it gets somehow negative charge because this is a protein. So this negative charge is such a negative charge जो कि single stranded DNA के साथ, जो कि खुद भी negatively charged है, एक specific distance रख के तो movement को possible बनाएगा। Otherwise क्या possibility है, आपके पास ये template strand है, RNA polymerase जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं, negative and positive they stuck, no further movement. So in order to ensure that there is a specific force, there is no force of attraction, there is no strong force of repulsion, negativity is introduced in the RNA polymerase by the kinase activity. And then just look at this picture, the point, just to show you that how the three-dimensional things they proceed further। अगर आपको याद है DNA स्ट्रक्चर में हमने माइनर और मेजर ग्रुप्स की बात की थी। जो TBP है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, that is part of transcription factor 2D, it approaches the DNA from minor groove। This is one major groove, the alternative position, this is a minor groove। और यहाँ पे देखें पॉलीपेप्टाइड कैसे जो है DNA के अंदर तक जो है ना वो पेनिट्रेट करता है, and then this is the start point where from the denaturation of DNA will start, and then there comes the other transcription factors। This is just for your information। So the next step would be initiation and then elongation of the RNA synthesis, and elongation as well as initiation of the RNA in eukaryotes is controlled by the level of phosphorylation of the enzymes। अभी हमने बात की TF2H जो है उसमें काइनेज एक्टिविटी होती है एंड इट कैन फॉस्फोरिलेट द पॉलीमरेज। दिस इज द RNA पॉलीमरेज 2, और ये जो येलो कलर के स्मॉल बीट्स की एक चेन है, दिस इज द कार्बोक्सिलिक टर्मिनल ऑफ द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजाइम। यू रिमेंबर प्रोटीन्स का एक अमीनो एंड होता है, एक कार्बोक्सिलिक एंड होता है। सो दिस इज द कार्बोक्सिलिक एंड ऑफ द RNA polymerase। RNA polymerase is an enzyme which is a protein।
अब अगर हम इसके सीक्वेंस या अमाइनो एसिड अरेंजमेंट के ऊपर जाएं तो वी विल सी दैट देयर आर मल्टीपल repeats of a stretch of 7 amino acids. One, if you look at this 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7. So a hepta sequence, 7 amino acid sequence, is repeated multiple times, and in this particular case this sequence is repeated over I think I don't have the number here, but is repeated several times. And for initiation जो transcription factor 2H है, it is going to phosphorylate an amino acid present at number 5 position in the 7 amino acid sequence, and this amino acid is the serine amino acid. हम इसके सारे साथ के साथ amino acid के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, but not required. We only need to know which amino acid needs to be phosphorylated for initiation, and for elongation which amino acid is going to be phosphorylated. So here TF2H is going to phosphorylate serine at number 5 position in this sequence at CTD. That will initiate the transcription. Once the transcription is initiated, then the amino acid which is present at number 2 position here in this hepta sequence, number 2 position also contains serine amino acid. So let's see this number 2 position. When this number 2 position gets phosphorylated, then the polymerase is responsible for elongation of the messenger RNA. So at the same time, keep in mind that besides TF2H, there are other kinases which also play their role, like TEFB. Phosphorylate TEFB is another kinase. TF2S plays its role, and ELL plays its role. So summarizing this slide, that the polymerase has at CTD carboxyl terminal domain, hepta amino acid sequence which are repeated several times. उनमें जो और फिफ्थ और सेकेंड पोजीशन के ऊपर serines amino acid होते हैं, they play important role in the process of transcription. To initiate the transcription, TF2H is going to phosphorylate number 5th amino acid, and once the initiation is done, then the other kinases as well as TF2H will phosphorylate the serine at number 2 position, and after this phosphorylation we will get the extension of the messenger RNA. Any questions? सर ये सीरीन वाला पॉइंट क्लियर कर दें, 2 पोजीशन वाला। हमने जो स्टेप्स की Yes, बात sir. की है ना, हमने जो स्टेप्स की बात की थी कि पहले इनिशिएट होगी ट्रांसक्रिप्शन, फिर एलोंगेशन होगी और फिर टर्मिनेशन होगी। प्रोकैरियोट्स में हमने कह दिया था नुस फैक्टर आता है जो कि एलोंगेशन की जिम्मेदारी लेता है। यहाँ पे मैंने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की असेंबली की बात कर ली, और उसके बाद पॉलीमरेज की बात कर ली, और उसके बाद अब बात करनी है हाउ द ट्रांसक्रिप्शन विल स्टार्ट एंड हाउ द आरएनए विल बी एलोंगेटेड। सो उसके लिए बात की है हमने कि जो पॉलीमरेज है उसमें CTD के ऊपर मल्टीपल अमाइनो एसिड्स होते हैं। उनमें हमारी जो इंटरेस्ट का अमाइनो एसिड है वो नंबर 2 पोजीशन का है और नंबर 5 पोजीशन का है। अगर नंबर 5 पोजीशन का अमाइनो एसिड जो है वो फॉस्फोरिलेट होगा तो इट विल इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। Once transcription is initiated, then for elongation and for movement of polymerase along the template, number 2 के ऊपर जो serine है वो phosphorylate होगा, so that the extension or elongation of messenger RNA can be done. और फिर 5 वाले की जरूरत होगी। देखिए तो पे अब serine आ गया। अगर मैं इसमें टेक्निकली बात करूं, 5 वाला अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेगा। जब 5 के ऊपर फॉस्फोरिलेशन हुई, लेट्स सपोज हम एक ही अमाइनो एसिड के ऊपर जो है अगर 50 रिपीट्स है तो 50 फॉस्फेट्स आ गए। जब नंबर 2 के ऊपर भी होगी तो 100 फॉस्फेट्स आ जाएंगे। दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू बी डबल्ड। ठीक है, जब fifth one is going to be only for initiation, and for elongation the second one has to be phosphorylated.
It doesn't mean the fifth one is going to be dephosphorylated. It will remain phosphorylated. Then comes the last step of the transcription, that is the termination. अब हमने बात की थी प्रोकैरियोट्स में कि there is two type of termination, like raw dependent termination और raw independent termination. So यहाँ पे जो है little is known about the mode of termination of transcription, लेकिन it is believed that there are some sequences which are present towards 3' end, अभी हम उनकी बात करते हैं, which are indicators of transcription termination. क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एक और फ़र्क है, वो है मॉडिफिकेशन का, आरएनए की मॉडिफिकेशन का. प्रोकैरियोट्स में we have not spoke about any 5' cap or poly A tail or any splicing, but यहाँ पे हमें बात करनी है उसके हवाले से. So it is believed that there are certain sequences present towards 3' end of the messenger RNA which recruit the factors जिन्होंने poly A tail add करनी होती है RNA में. So that can be an indication for termination of the transcription from the template. Poly A tail उस वक्त add होती है जब RNA separate हो जाए from the template strand. But before going into that detail, I need to add some more information because अभी process complete नहीं हुआ. Okay, so polymerase की बात हो गई, template की बात हो गई. आवाज स्टक हो रही है जी, अब आ रही है. मैंने कहा कि सर अब आ रही है जी, पॉलीमरेज की बात हमने कर ली, टेम्पलेट की बात कर ली, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात कर ली. अब और PIC की भी बात होगी, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की. Besides all these complexes, another set of proteins, another sequence in the DNA is involved to enhance the transcription of eukaryotes. And for that purpose, if you look at this slide, those sequences are called as enhancers. अब इसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करूँगा. आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है that is present here. इसमें प्रमोटर भी है, इसमें ऑपरेटर भी है. फिर उसके बाद on towards the upstream or towards downstream, thousands of nucleotide away, there is another DNA sequence which is involved in replication of this particular gene. These sequences are called as enhancer sequences. If you look at this picture, this is what I actually want to explain. ये आपका टाटा बॉक्स है, प्रमोटर है, इस साइड के ऊपर आपकी जीन है जिसने ट्रांसक्राइब होना है. ये वो सीक्वेंस है जो कि thousands of nucleotides away है from the promoter. It is brought near to the promoter region by making a U-turn or by making conformational changes in the DNA, and this enhancer interacts with the PIC through a protein which is called as activator protein and an adapter molecule. जो definition है enhancer sequence की, these are specific sequences. इनकी definition ये है, they are present thousands of nucleotides away from the gene, they enhance the transcription upstream or downstream. फिर इनकी एडिशनल प्रॉपर्टी ये है, आप इनको यहाँ से रिमूव करें, इसकी ओरिएंटेशन 180 डिग्री पे कर दें, मतलब इसको टर्न करके दोबारा यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दें, या इसको यहाँ से उठा के अपस्ट्रीम से उठा के डाउनस्ट्रीम में कहीं पे इनकॉर्पोरेट कर दें. They will retain their function. And if you remove the enhancers, transcription will still happen, but it will be decreased. The transcription will be decreased by 100-fold. आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो transcription efficiency है, that will become slow and slow. So these are enhancers present thousands of nucleotides away, upstream, downstream of the DNA. If you remove them and invert them, place them back at the same position or downstream or upstream of the position of the gene, they don't lose their function. They interact with the PIC through a protein which is called as activator protein,
and need another protein which is called as adapter molecule. यहाँ तक बात क्लियर है जी? These are the enhancers. उसके बाद अभी तक हमने जितनी बात की है that is about how the gene expression starts. There are certain questions which are not so common. How the gene expression is stopped. अभी जो बात की कि टूवर्ड्स टर्मिनेशन कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जहाँ पे सीक्वेंस की बात की कि 3' सीक्वेंस हो सकता है, वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी अपना रोल प्ले कर सकती हैं जिनको हम रिप्रेसर का नाम देते हैं, विच रिप्रेसेस द ट्रांसक्रिप्शन, बट दीज आर नॉट सो कॉमन. फिर एक क्वेश्चन आया था शुरू के किसी लेक्चर में कि दो जीन्स जो हैं उनको आप कैसे आइसोलेट करते हैं, हाउ यू मार्क द बाउंड्रीज ऑफ द जीन, कि अगर आपके पास एक जीन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रही है, हाउ वी विल डिफाइन कि ये जीन यहाँ पे एंड हो रही है और इसके बाद आगे से एक नया जीन स्टार्ट हो रहा है. उस वक्त मैंने कहा था कि दैट इज़ मेड पॉसिबल बाय प्रेजेंस ऑफ सम सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जिनको हम नाम देते हैं इंसुलेटर्स का. सो दीज आर द इंसुलेटर. अगर इस पिक्चर को देखें, मैंने ब्लू और रेड जीन के दरमियान एक सेगमेंट ड्रॉ किया है येलो कलर में. दिस इज द इंसुलेटर. इंसुलेटर की डेफिनेशन पूछी जाए तो यू कैन से दैट द इंसुलेटर इज सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड that marks the boundaries between the two genes. Any question ji so far? सर ये लेटर नहीं जो समझ आया. इंसुलेटर को दोबारा एक्सप्लेन कीजिए. किसको? इंसुलेटर को. ओके. दूसरा सवाल क्या है? इंसुलेटर की सिंपल सी जो है वो डेफिनेशन है कि दिस इज अ बाउंड्री बिटवीन टू जीन्स. हमने, अगर मैं अब इसको इस तरह से बताऊं, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. सर आपने बताया था ना कि डीएनए जो है वो बायडायरेक्शनल ट्रांसक्रिप्शन होगी. डीएनए बायडायरेक्शनल ट्रांसक्रिप्शन होगी कि ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिडायरेक्शनल है? यूनिडायरेक्शनल होती है, रेप्लिकेशन बायडायरेक्शनल होती है. ओके. सो इफ यू रिमेंबर, हमने क्रोमोसोम्स की लेंथ्स की बात की थी. क्रोमोसोम्स आर लीनियर एंड लॉन्ग एंड हर क्रोमोसोम के ऊपर मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट होती हैं. उन जीन्स की जो बाउंड्री है उसको डिफाइन करना है. सो देयर इज नॉट any specific defined boundary. There is no specific protein which will mark the boundary. These are the nucleotides which define okay, this is a boundary between gene A and gene B. That sequence is known as insulator. अगर आप कभी पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे गए ना, या किसी भी इंटरनेशनल कंट्री के आप बॉर्डर्स के बारे में पढ़ें, तो दोनों बॉर्डर्स के दरमियान एक स्पेस होती है 5 फुट 10 फुट की, जो उसको कहते हैं नो मैंस लैंड. ना वो जो है पाकिस्तान की ऑनरशिप होती है, ना वो इंडिया की ऑनरशिप होती है. दैट इज़ द बाउंड्री, दैट इज़ अनयूटिलाइज्ड स्पेस. सो सिमिलरली, अगर ये जीन ए है और ये जीन बी है, तो उसके दरमियान ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है दैट मार्क्स द बाउंड्री ऑफ जीन ए एंड बी, दैट इज़ कॉल्ड एज इंसुलेटर. यस सर आगे. ओके. So any other question? Okay. सर जब वो टाटा बॉक्स वो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पे होगा या मतलब टाटा बॉक्स को प्रोमोटर में मतलब मौजूद होता है? टाटा बॉक्स प्रोमोटर में मौजूद होता है. जब मैसेंजर आरएनए बनना है तो उसमें उस टाटा बॉक्स को देख के आगे मतलब बनाना है ना, तो वो तो एक रुक जाए, यहाँ पे रुक जाए. टाटा बॉक्स प्रोमोटर में है, प्रोमोटर्स ट्रांसक्राइब नहीं होते. प्रोमोटर्स ट्रांसक्राइब नहीं होते. लेकिन उसको वो मतलब तो वो बाद में मतलब बाद में वो काटे जाएगा ना. आपने कहा था कि उसकी आपने कहा था कि चेंजेस होती हैं उसके बाद इन जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है, तो उसके बाद ये जो अगर टाटा बॉक्स वाला सीक्वेंस होगा तो ये वाला कट जाएगा. देखें, आप ये एक पिक्चर देख लें, गौर से देखें. मैं दोबारा से बता देता हूँ. आपने जो पूछा था बाद में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ क्या होगा. कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो अपनी पोजीशन पे जो हैं वो स्टिक रहते हैं, लाइक TF2D. इसने टाटा बॉक्स को नहीं छोड़ा.
कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन जो हैं दे लीव द डीएनए they leave this RNA polymerase, and some new transcription factors or proteins they come and bind over here. So transcription factor का काम है initiate करवाना, उसके बाद elongation जो है that is the job of polymerase and some other proteins. Transcription will start from 0 point. It will not start from Tata box. ओके, तो सर वो जो मॉडिफिकेशन जो होंगे मैसेंजर आरएनए में, अभी उनकी बात करेंगे. ओके. Okay जी. So then comes the processing of eukaryotic messenger RNA. यूकैरियोट्स में 3 किस्म की मॉडिफिकेशंस होती हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर. पहली मॉडिफिकेशन है वो तो इमीडिएटली हो जाती है इवन स्टिल द ट्रांसक्रिप्शन इज ऑनगोइंग, एंड दैट मॉडिफिकेशन इज एडिशन ऑफ द 5 प्राइम जी कैप. ये कैपिंग इसलिए ज़रूरी है कि जब मैसेंजर आरएनए ने साइटोप्लाज्म में जाना है तो वहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियेसिस मौजूद हैं. हमने एक्सोन्यूक्लियेसिस एंजाइम्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, और उसमें हमने देख लिया 5 to 3 एक्टिविटी भी होती है और 3 to 5 एक्टिविटी भी होती है. सो सिंपल सी बात है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम कैन हाइड्रोलाइज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. सो हमें 5 प्राइम एंड को जो है वो सिक्योर करना है. उसके लिए इमीडिएटली मॉडिफिकेशन होती है 5 प्राइम एंड के ऊपर, और एक कैप ऐड की जाती है जिसको आपने 7 मिथाइल जी कैप के नाम से पढ़ा हुआ है. 7 मिथाइल जी इज़ नथिंग एल्स एक गुआनोसिन है, और उसकी 7th पोजीशन के ऊपर मिथाइलेशन हुई है. If you look at this particular side, this is an inverted 7-methyl guanosine, और अगर ये देखें this is 2 ring structure and 7th position के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. The property or the bond by which this cap is attached with the 5 prime end of messenger RNA. So this is the 5 prime end of the messenger RNA. The distinction between the adjacent nucleotide, अगर दोनों adjacent nucleotides को देखें so you can see the phosphodiester bond. लेकिन जो cap है इसकी bonding different है. It is attached by 5 to 5 triphosphate bridge, whereas the phosphodiester bond is 5 to 3 phosphodiester bond. So this modification or this different bond at the 5 prime end between the cap and the 5 prime end of the RNA protects this end from the exonuclease activity of the nuclease. So this is going to happen soon after 25 to 30 nucleotide का messenger RNA ready हो जाता है. 5 prime end is available, बाहर की तरफ extend करता है. उस जो कॉम्प्लेक्स जो मशीनरी मौजूद होती है वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के, then immediately we get this and modified, और 5 prime end के ऊपर कैपिंग कर दी जाती है. After that you can see here transcription is ongoing, and unless until we come up with some specific sequences which indicate that now this is the time for polyadenylation. Poly A tail की addition का time है. So there are 2 sequences. One sequence is poly A sequence. You can see here that A is many A's are present in this particular point. और जो दूसरा सीक्वेंस है यहाँ से डाउनस्ट्रीम चले जाइए, तकरीबन इस पहले सीक्वेंस से 50 न्यूक्लियोटाइड नीचे जाएंगे तो देन आपको एक दूसरा सीक्वेंस मिलता है which is GU rich sequence, if you can read the sequence over here. So these 2 sequences are responsible for polyadenylation. How it is going to happen we see in this picture. So this is a point where we have poly A sequence. This is the point where we have GU sequence. These 2 sequences are recognized by cleavage factors, and these cleavage factors are named as CPSF, you can see here, and CSTF. CPSF stands for cleavage and polyadenylation specificity factor. This protein means now there will be cleavage and addition of poly A tail. CSTF is cleavage stimulating factor. So these 2 proteins, they have association, they have affinity with each other. These 2 proteins, they come close together like this one, and they come together to make the loop like folding at this particular end. And when we move further, these 2 proteins
PSF and STF, they are locked by two more factors which are known as CF1 and CF2. This is the position where you can see that they are going to come and they are going to lock these two proteins together, so that you can see here a loop-like structure. Then there comes the polymerase, and that polymerase is known as PAP, poly A polymerase. You can see over here, it comes and cleaves the मैसेंजर RNA at a specific point, और ये specific point जो है इस particular sequence poly A sequence से around 10 to 30 nucleophile downstream है. I will show it once again. From poly A sequence, if this is poly A sequence, so this is the poly A sequence के साथ जो protein bound है. From this point up to this point, there is a nucleotide length of 10 to 35 nucleotides. The enzyme comes, it binds over here and it cleaves the pre-mRNA at this point, and then you can see here, once the cleavage has taken place, all these proteins, they are no more required. They leave the point, they leave this place, and poly A polymerase will start adding the adenosine nucleotide at this tail. As long as this addition is done, with the passage of time, poly A tail is covered by some proteins which are known as PAB2, poly A binding proteins 2, and the addition of poly A tail keeps on going. The extension of poly A tail keeps on going until we get adenosine residues of around 200 to 250 nucleotide long. In brief, अगर आपसे पूछा जाए poly A tail की लेंथ क्या होती है, you can say 200 to 250 adenosines are present in poly A tail. So after the poly A tail is added, PAP is no more required, it goes off, and you have this modified DNA that modified RNA that has gap at 5' end and that has a tail at 3' end. Still, this is not ready for transcription, for translation. It is not ready to go out in the nucleus, because इसमें अभी splicing का process होना है. That is going to be our next lecture. This is about the eukaryotic transcription. Now I will relate today's process with yesterday's process very quickly, so that we can differentiate between the transcription of both prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes में जी हर जीन की जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी उसके बाद ये सीक्वेंस लाजमी होगा उसके पास, ये ए वाला जी और यू वाला. यस, यूकैरियोट्स में मैंडेटरी है, इसके बगैर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता. आरएनए कैन नॉट लीव द न्यूक्लियस. सो प्रोकैरियोट्स में देखें, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रही आरएनए की. स्टिल द ट्रांसक्रिप्शन इज ऑनगोइंग, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है. दैट इज एन इंडिकेशन प्रोकैरियोट्स हैव transcription and translation as a coupled process. Eukaryotes में things are different. Transcription होगी, modification होगी, RNA cytoplasm में जाएगा, then translation होगी. So this is one difference. फिर जो यूकैरियोट की प्रोसेसिंग है उसमें हमने कैपिंग की बात कर ली, टेलिंग की बात कर ली, स्प्लाइसिंग की अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. All these three processes, they take place in eukaryotes only. They don't take place in prokaryotes. And when we further add about the process, eukaryotes में 3 किस्म की polymerases हैं, prokaryotes में only one polymerase is there. eukaryotes में transcription factors की ज़रूरत पेश आती है, prokaryotes में transcription factors नहीं involve होते. eukaryotes में monocystronic messenger RNA होता है, prokaryotes में polycystronic messenger RNA हो सकता है, whereas eukaryotes have monocystronic.